So hello everyone, let us continue our discussions on the properties of complex numbers. Okay, so in the last class already I have started the properties. I have explained 4 properties. So we will continue the same. Okay, properties of complex number. Number 5, property number 5, sum and difference of complex numbers. Sum and difference of complex numbers. तो पहले सम के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं डिफरेंस में जाऊंगा. ओके, लेट z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id be the two complex numbers. Let z1 equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id be the two complex numbers. Then the sum of these two complex numbers, the sum of z1 and z2 is also a complex number. Okay, sum of two complex number is always a complex number. That is z1 plus z2 is equal to a plus ib plus c plus id. अभी देखो ऐड कैसे करना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जा सकता है. इट इज नॉट नॉर्मल एडिशन, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी होता है, रियल पार्ट भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो जब हम लोग ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा रियल टर्म के साथ रियल टर्म को ऐड किया जाता है एंड इमेजिनरी टर्म के साथ इमेजिनरी टर्म को ऐड किया जाता है. ओके, सो हियर वी कैन राइट a प्लस c प्लस i इंटू b प्लस d. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली. जो नंबर में रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है, then we can say that it is a complex number only, because the complex number always in the form of a plus ib and it is also in the form of a plus I into b. Okay, so here clearly we can say that the real part of z1 plus z2, the real part of z1 plus z2 is equal to a plus c, whereas the imaginary part of z1 and z1 plus z2, this is equal to b plus d. Okay, so the sum of two complex number is always a complex number. So the real part of this summation is a plus c, whereas the imaginary part of the summation is b plus d, because the coefficient of b plus d is I. So that means we can say that b plus d is the imaginary part. और real part क्या होता है? The term, the number which is free from I, that number is called real number. Okay, so this is all about the sum of two complex number. अगर sum समझ में आया तो difference भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि difference में क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा. Okay, so difference of two complex numbers. Let us consider again the same complex numbers z1 and z2. So therefore z1 minus z2, this is equal to a plus ib minus c minus id. Yes, the difference of two complex number is also a complex number. So again, in case of summation and difference, same thing only you have to do. So real के साथ real term को add करना है. So a minus c plus I into b minus d. Okay, z1 minus z2 is equal to a minus c plus I into b minus d. Therefore, we can say that the real part of z1 minus z2 is a minus c, whereas the imaginary part of z1 minus z2 is b minus d. So whenever you are asked to write the imaginary part, listen, one important point I am telling. Whenever you are asked to write the imaginary part of any complex number, then don't write the number with I. सिर्फ I का कोएफिशिएंट लिखने से ही होगा. Okay, like here I have written a minus c plus I into b minus d. तो इसका imaginary part क्या होगा? z1 minus z2 का imaginary term क्या होगा? Only b minus d. Don't write I into b minus d. Okay, just we need to write the coefficient of I. Alright, so this is property number 5, sum and difference of two complex number. Next, number 6, product of two complex number. Product of two complex number. Number 6, product. The product of two complex number is always a complex number.
The product of two complex number is always a complex number. Let us consider z1 equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id. Therefore z1 into z2 product निकालना है, so a plus ib into c plus id. Okay, product means multiplication. तो यहाँ पे भी नॉर्मल एल्जेब्रिक जैसा ही एक्सपांड करना है. यहाँ पे एक्सपांड कैसे किया जाता है, a into c, ac plus I into AD plus I into BC plus I into I square into BD. Yes, is it okay? Just normal multiplication, expansion जैसे किया जाता है. Okay, in case of product, no need to see the real and imaginary part. सबको सबके साथ multiply करो. All right? Okay. After expansion, now you have to separate the real and imaginary term. मीन्स हमेशा ना कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी न्यूमेरिकल है तो ऑलवेज ट्राई टू express the complex number in the form of a plus ib, because this is the standard form of a complex number. Okay, this is the standard form of a complex number. जैसे straight line का भी standard equation होता है, there is linear equation ax plus by plus c equal to 0. वैसा ही complex number कोई भी standard form होता है, and the standard form is a plus ib. So complex number का कोई भी क्वेश्चन है तो always try to write the complex number in the form of a plus ib. So here also I am going to do the same thing. After expansion, now I am going to separate the real and imaginary part. Like a plus ib form में मैं arrange करूंगा, और arrange करना भी चाहिए. ठीक है, तो कैसे arrange करूंगा? Identify the real term. AC is the real term because no I is there with AC. And apart from AC, is there any term which is free from I? Yes. The last term is free from I. देखने में लग रहा है कि I तो है इसके साथ. But what is the value of I square? The value of I square is -1. तो मतलब I तो चला जाएगा ना, eliminate हो जाएगा. So AC minus BD. Minus plus will be minus only. AC minus BD is the real part. Then if I take I common, here AD plus BC will be there. Okay, so this is z1 into z2. ये है z1 into z2 का वैल्यू, AC minus BD plus I into AD plus BC. Alright, so whenever you are asked to solve any question related to complex number, always try to arrange in the form of a plus ib, because this is the standard form of a complex number. Alright, वही फॉर्म में अरेंज किया. So from this we can say that the real part of z1 into z2 is AC minus BD. Yes, whereas the imaginary part of z1 into z2 is AD plus BC. ठीक है, like this we can separate the real and imaginary part. Alright, so this is all about property number 6. Next will come quotient of two complex number. Quotient of two complex number. Number 7, or division of two complex number. ठीक है, same statement. Say z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to say c plus id. Be the two complex numbers. Okay, z1 equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id. डिवीजन का रूल थोड़ा सा अलग है, ठीक से देखना है कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है. अलग है मतलब सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अलग होता है, वो कैसे किया जाता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो देयरफॉर z1 बाई z2 डिवीजन बोला, क्वोशिएंट रूल. ओके, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 बाई z2 इज इक्वल टू a प्लस ib डिवाइडेड बाई c प्लस id. यस और नो? आफ्टर दैट हाउ टू सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib बाई c प्लस id. ऐसा फॉर्म में रखने से फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. कभी फुल मार्क्स क्या, एक भी मार्क नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर डिवीजन रूल यूज करना है तो कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है. इसमें क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. लुक एट द डिनोमिनेटर हियर. इन द डिनोमिनेटर हियर इमेजिनरी टर्म इज देयर और नॉट? आई, जो टर्म में आई रहेगा उसका मतलब वो इमेजिनरी टर्म है. सो अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म होता है तो वी नीड टू रिमूव दैट इमेजिनरी टर्म. We have to convert the denominator into real term. It is just like this form only. 1 by 0 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड. यस और नो? तो डिनोमिनेटर में जब 0 होता है वो मीनिंगलेस हो जाता है.
है कि नहीं, अनडिफाइंड रिजल्ट मिलता है। इन द सेम वे हियर वी कैन से दैट अगर डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म होगा तो इट विल बी ऑल्सो लाइक अनडिफाइंड वैल्यू ओनली। जैसे 1/0 का वैल्यू अनडिफाइंड है, वैसे ही इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में स्मॉल लेटर आई रहेगा तो वो भी ऑलमोस्ट अनडिफाइंड रिजल्ट देता है। इमेजिनरी नंबर है ना, तो नीचे इमेजिनरी नंबर है तो कैसे डेफिनिट वैल्यू मिलेगा या फिर रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो दैट इज वाई वी नीड टू रिमूव दिस आई फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द न्यूमरेटर, आई एम थिंकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर ओनली, दैट हाउ टू रिमूव दिस आई। और रिमूव करना भी पड़ेगा, यही इसके बारे में ही मैं बोला कि थोड़ा सा अलग है डिवीजन रूल है। आई को हटाना है, कैसे आई को हटाना है, जस्ट यू हैव टू रेशनलाइज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज करो बाय टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, नॉट द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट आई फ्रॉम द डिनोमिनेटर। हम लोगों को डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है, न्यूमरेटर के बारे में नहीं। ऑलराइट, सो हाउ कैन वी रिमूव दिस आई? by taking the conjugate of the denominator, we just rationalize it. Okay, by taking the conjugate of the denominator you have to rationalize it. तो conjugate के बारे में मैं लास्ट क्लास में बताया था। so a plus ib divided by c plus id into the conjugate of c plus id is c minus id। तो हो गया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके हमेशा रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमेशा ऐसा ही है रूल। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आई होगा तो वी हैव टू रिमूव आई फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मेक इट रियल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, नाउ एक्सपांड इट, a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, नॉर्मल एक्सपांशन करना है, ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर इंटू बी डी। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? a plus b into a minus b फॉर्म में है। yes, the denominator looks like in the form of a plus b into a minus b. The formula is a square minus b square. So ac, now like product rule only, after the expansion now identify the real term. ac is the real term. Apart from ac one more term is there, that is the last one. आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, सो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस बी डी। तो ए सी प्लस बी डी को एक ब्रैकेट में डालो, बिकॉज ये रियल पार्ट है। देन आफ्टर दैट यू टेक माइनस कॉमन, इफ आई टेक माइनस कॉमन दिस विल बी बी सी माइनस ए डी, वो और एक ब्रैकेट में डालना है। एंड देन इन द डिनोमिनेटर, लुक एट द डिनोमिनेटर नाउ, आई इंटू डी होल स्क्वायर मीन्स आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। And what is the value of I square? -1, minus of minus it will become plus. So denominator में अभी रहेगा c square plus d square. Okay? Now the denominator is in the form of c square plus d square. Now look at the difference. जो initially था नीचे I, denominator में I था, अभी denominator में I नहीं है, मतलब अभी denominator जो है वो पूरा real part है। Is it okay? So in this way you have to remove I from the denominator. So after this simplification, the last step is now separate real and imaginary part, that is AC plus BD divided by C square plus D square plus I into BC minus AD divided by C square plus D square. This is Z1 by Z2. In this way we can find out the division. Simplification ठीक से देखना है बस। If there is any I in the denominator, we have to eliminate, we have to remove I from the denominator by taking the conjugate of the denominator and then you rationalize it. Then automatic, you can check the imaginary part will become real only. Look at the term now, c square plus d square. Okay? And after the simplification, you know how to write, how to represent the complex number. Always you have to represent the complex number in the form of a प्लस आई इंटू बी। ठीक है, तो चलो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। नाउ नेक्स्ट विल कम द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आ सकता है यहां से 1 मार्क का, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव inverse of a complex number
शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. लुक एट हियर, if z is equal to a plus ib is a complex number, if z is equal to a plus ib is a complex number, then the multiplicative inverse of the complex number is denoted by z to the power minus 1, that is equal to 1 by z, which is equal to 1 by a plus ib. Yes or no? The multiplicative inverse of the complex number is denoted by z to the power minus 1, and we all know that z to the power minus 1 can be written as 1 by z, that is 1 by a plus ib. Okay, now since look at the denominator, I is there. Just now I have explained the quotient rule. Yes, so since I is there in the denominator, take the conjugate of the denominator and then rationalize it, make it real, make the denominator real. So a minus ib divided by ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी होल स्क्वायर हो जाएगा अगर रेशनलाइज करूंगा तो ये क्या होगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल इंटू आई. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी. ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सिंप्लीफाई. सो जनरली 1 mark questions are coming from this property. Okay, existence of multiplicative inverse. The formula is z to the power minus 1, or you can write it as 1 by z also. Alright, so this is all about property number 8. So basically और भी properties है, लेकिन mainly ये सब properties ही ज़्यादा use होता है. Okay, now I'm going to discuss some useful expansion. Actually ये discuss करने का कोई बात नहीं है, ये सिर्फ formula ही है, useful expansion result. ठीक है, some useful expansion. Number 1, if z1 and z2 are any two complex numbers, listen, if z1 and z2 are any two complex numbers, then z1 plus z2 whole square, this is equal to normal formula, z1 square plus 2z1 into z2 प्लस z2 स्क्वायर. जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज किया. नंबर 2, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज z1 स्क्वायर माइनस 2z1 इंटू z2 प्लस z2 स्क्वायर. नंबर 3, z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, सेम algebraic formula only, z1 plus z2 into z1 minus z2. Number 4 expansion formula, z1 plus z2 whole cube, apply a cube plus b cube formula, a cube, that is z1 cube plus 3a square b, that is 3z1 square into z2 plus 3z1 into z2 square plus z2 cube. Alright, तो ये हो गया z1 plus z2 whole cube का फॉर्मूला. Then z1 minus z2 whole cube, z1 cube minus 3z1 square into z2 plus 3z1 into z2 square minus z2 cube. So ये एक्सपांशन फॉर्मूला यूज हो सकता है कभी कभी. ठीक है, नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्मूला के जैसा ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन a प्लस बी होल क्यूब, देन a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, इसका प्रूफ जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में. ऑलराइट, सो दीज आर द सम एक्सपांशन फॉर्मूला. So till now whatever I have discussed about how to separate real part, how to separate imaginary part and the properties, all these things, तो ये सब प्रॉपर्टीज रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर पूरा प्रॉपर्टीज भी क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी कैसा टाइप का हो सकता है वो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन जैसा ही होगा. टेक वन एग्जांपल, से z इक्वल टू, इफ z इज इक्वल टू √2 माइनस under root minus 3, if z is equal to √2 minus under root minus 3, then find the value of real part of z, imaginary part of z, then z bar and mod of z. Okay, देखो एक ही क्वेश्चन से हम लोग चार टर्म का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया.
सो अभी कैसे वैल्यूज निकाला जाता है वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। यहां से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क, 1 फॉर रियल पार्ट, 1 फॉर इमेजिनरी पार्ट, 1 फॉर conjugate, 1 for modulus. Okay, so whenever you are asked to find the real part or imaginary part or the conjugate of any complex number or the modulus of any complex number, the first thing you have to notice that whether the given complex number is in the form of a plus ib or not. Whether the given complex number is in the form of a plus ib or not. Look at the complex number. This is not in the form of a plus ib because ये क्वेश्चन में i ही नहीं है, तो आई लाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी. सो कैसे इसको अरेंज करोगे, देखो √2 इज ए रियल नंबर, नो नीड टू मॉडिफाई दिस फर्स्ट टर्म, माइनस दिस √3. क्लियरली वी कैन से दैट दिस इज इमेजिनरी नंबर, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं -1 × 3, है ना. सो √2 माइनस, and this -1 can be replaced by I square because we know the value of I square is only -1. तो √over के अंदर I square है तो ये बाहर लेके आने से ये हो जाएगा I√3. Now look at the complex number. Now it is in the form of a plus ib. Yes, √2 minus I√3. It is in the form of a plus ib. So अभी यहां से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं रियल नंबर क्या होगा. So therefore clearly we can say that the real part of z is √2. Clearly we can say that the imaginary part of z is -√3. -√3 होगा because यहाँ पे बीच में माइनस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो a प्लस ib होना चाहिए, तो इसीलिए माइनस को यहाँ पे लिखा गया है. ओके, नाउ z bar means the conjugate. The conjugate of this complex number. So conjugate कैसे निकाला जाता है? Conjugate means just we need to change the sign of the imaginary term. साइन यहाँ पे माइनस है तो conjugate में हो जाएगा प्लस. बस ये हो गया z बार का वैल्यू. एंड द लास्ट वन इज mod z. mod z का फॉर्मूला क्या है? If z is equal to a plus ib, then mod z is equal to √a square plus b square. So mod z is equal to, तो फिर क्या होगा? अंडर रूट. A means the real part, so here the real part is √2, so √2 whole square plus b square. B is the imaginary part, so the imaginary part is, don't write √-3. After the modification what we got, that one you have to use now. Okay, don't use the given complex number because the given complex number is not in the form of a plus ib. So after modification only whatever result we get, that result only you have to use. So the value of b is here -√3. So -√3 whole square. So √2 whole square is 2. √3 whole square is 3. 2 plus 3 that is equal to √5. So the value of mod z is equal to √5. Alright. So these are the terms. ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो तरीका याद होना चाहिए, वो तरीका पता होना चाहिए. जैसे कि यहां से डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं until and unless we can express the complex number in the form of a plus ib. एक्सप्रेस करना है उसके बाद ही निकल सकते हैं. ठीक है, so few more properties I will discuss now. So next let us continue our discussion on properties. Now I'm going to discuss few important results. Properties of conjugate of complex number. Every time I'm writing cn means the short form. Okay, complex number. Properties of conjugate of complex number. So already we have studied about the conjugate of a complex number. Conjugate means sign change होता है imaginary part का, बस वही है conjugate. So few properties I'm going to discuss now. The number one, if z is any complex number, then z bar whole bar, that means conjugate of any complex number is equal to the given complex number only. Z bar whole bar is equal to the given complex number. Let us take one example. Example क्या, जो proof है वो दिखा रहा हूँ. Say z equal to a plus ib. Say z is equal to a plus ib. Then what will be the value of z bar? It will be a minus ib only. Again इसका बार निकालूंगा, again इसका conjugate निकालूंगा, तो क्या होगा? a minus ib whole bar means a plus ib again. And this a plus ib is the value of z only. Yes. The conjugate of any complex number is equal to the given complex number only. This is the first property.
Z bar whole bar is equal to Z. All right. So property number 2 next. Property number 2. Z into Z bar. Z into Z bar is equal to mod Z whole square. Z into Z bar is equal to mod Z whole square. कभी कभी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर याद रहेगा तो. हाँ, सो Z into Z bar is equal to mod Z whole square. कैसे हुआ देखो, से Z equal to A plus IB and Z bar is equal to A minus IB. Alright, so Z into Z bar, पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लेता हूँ. Z into Z bar निकालने से क्या निकलेगा, A plus IB into A minus IB. So if I multiply A plus B into A minus B फॉर्म में है, it will be A square minus IB whole square. That is A square plus B square, because we know the value of I square is minus 1. Minus minus it will become plus. तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू. Now take a look at the right hand side of this property. Mod Z whole square. तो mod Z whole square means under root. पहले mod का वैल्यू लिख लेता हूँ. Modulus of Z कैसे लिखा जाता है? If Z is equal to A plus IB, then mod Z is equal to, चलो पहले mod Z का वैल्यू निकालता हूँ. Mod Z is equal to what? A square plus B square. Yes. Therefore mod Z whole square करने से क्या निकलेगा? A square plus B square only. So Z into Z bar का वैल्यू भी A square plus B square. Mod Z square is also A square plus B square. So clearly we can say that Z into Z bar is equal to mod Z square. This is property number 2. Okay. Next, property number 3. Property number 3. Z plus Z bar is purely real. Z plus Z bar is purely real. कैसे हुआ? Z plus Z bar purely real कैसे हुआ? Again you take one example. Say Z equal to A plus IB. Then Z bar will be A minus IB. Yes or no? Conjugate of Z. Now if I add these two complex number, Z and Z bar को add करने से क्या रहेगा? IB will be cancelled. This is equal to twice A only. This is equal to twice A only, and we can say that clearly that twice A is the real part only. Okay, so that is why we can say that Z plus Z bar is a real part. Okay, if Z plus Z bar is real, then property number 4 हम लोग लिख सकते हैं कि Z minus Z bar is imaginary. Z minus Z bar is imaginary. Why? Because if Z equal to A plus IB and Z bar is equal to A minus IB, then Z minus Z bar में क्या रहेगा? A will be cancelled. I into 2B equal to 0, है ना? तो जिसके साथ, जो टर्म के साथ I होता है उसको तो इमेजिनरी टर्म ही बोला जाता है. So that is why we can say that Z minus Z bar is imaginary. Okay, so these are important properties. Direct we can use in ऑब्जेक्टिव. जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं आता है जो कि ये सब प्रॉपर्टी यूज करना जरूरत पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ओके, सो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5. Z1 plus Z2 whole bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. Property number 5. Try to prove this one. That will not, I am going to give the derivation. You just try to prove it. So it's easy only. Look at here. Here I have taken two different complex number. Okay. Up to property number 4, I have taken only one complex number, that is Z only. लेकिन property number 5 से मैं Z1, Z2 दो अलग अलग complex number लिया, तो you can consider Z1 equal to A plus IB, Z2 is equal to C plus ID. Then try to prove this one. Okay, property number 5 is Z1 plus Z2 whole bar equal to Z1 bar plus Z2 bar. Number 6, Z1 minus Z2 whole bar, which is equal to Z1 bar minus Z2 bar. Number 7, Z1 into Z2 whole bar, this is equal to Z1 bar into Z2 bar. These are the properties which we can use in objective. बार बार मैं यही चीज बता रहा हूं. Number 8, Z1 by Z2 whole bar, which is equal to Z1 bar by
Z2 bar provided Z2 bar is not equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड होता है, राइट? सो these are the properties of conjugate of a complex number which we can use when we solve numericals. All right, so in the next class I am going to discuss the properties of modulus of a complex number. तो ये सब तो conjugate of a complex number के बारे में डिस्कस किया. Property number 5, try to solve, try to prove. If you know how to prove property number 5, then you can easily prove number 6, 7, 8, because the first 4 I have explained by taking examples. So the property number 5, only property number 5 try to prove, remaining you can solve by yourself also. ठीक है, तो ये properties of conjugate of a complex number हो गया. So next class में मैं modulus के बारे में properties दूंगा. उसके बाद ही important part आएगा complex number का, that is argand plane. That one we will discuss later on. So thank you for today.